Good morning, students. Today we'll be looking at the same exercise, same topic, but different questions. We'll be today looking at some questions, uh, after 15th question because we have already done till question number 15 and we'll be looking after question number 15. So today, the very first question that we'll be doing is question number 16. In question number 16, if we read question number 16 and go through question number 16, it says, how many number consisting of 5 different digits can be made from the digits that are 1 to 9? 1 से लेके 9 तक the number must be odd. जो भी नंबर होगा वो ऑड होना चाहिए. ऑड नंबर क्या होता है? जब भी हम 5 डिजिट बनाते हैं ऐसे करके, whenever we make 5 digit number, so odd number के लिए it should be odd over here. Okay, so this point is fixed. How many different ways this point can be filled? From 1 to 9, how many odd numbers are there? If you count, there are 5 odd numbers. So how many ways it can be filled? This can be filled by 5 ways. Okay, I'm solving the first part. It can be filled by 5 ways, this part. Okay, second thing, rest of the parts can be anything. So how many columns do I have left? I have 1 2 3 4 columns left. And how many numbers are left? So if I have used one of the odd numbers, जैसे मैंने 9 यूज कर दिया, तब कितने बचे मेरे पास 8 बचे. So 8, okay, permutation and 4 into, I'll multiply by 5. Okay, and then whatever I get my answer, so I'll be finding my answer. When I find my answer, I'll be getting like 8 factorial, 8 into 7 into 6 into 5. Okay, so this is what I'm going to get after multiplying. Into multiply by 5. When you put the formula, you'll get this. Okay, I've directly done. And when you multiply, you might have a calculator, you can multiply, you'll get 8400. Okay, so that's how you'll be doing the questions. Second part, let's have a look in second part. The first 2 digits of each number are even. So if I have 5 digits, the first two columns should be filled with even numbers. So let's see the probability. Only just focus on the first 2 digits first, and then we can focus on the last 3. So I have how many even numbers? If you count 2, 4, 6, 8, I have 4 even numbers. And 4 even number में से मुझे 2 जगह भरनी है. So this is the permutation you are going to use. And rest of the 3, if I have 3, okay, I have to take 3 at a time. And how many options are left with me? If I have already used an even number, how many options are left with me? I am left with 8 options now. Are you guys getting it? So my answer is going to be 4 into 3 into 8 into 7 into 6. That's how I'll be getting my answer. Okay, I hope you guys are getting it. So first 2 columns were supposed to be filled with the first 2 digits of each number are even. They were supposed to be filled with even numbers. So I took the permutation or the arrangement of first 2 ones. So there were 4 altogether, 4 even numbers, and 2 slots were there. Okay, and then I put the formula. When I put the formula, I got this. After solving and putting in the formula, I got this 4 into 3. Okay, and this also, when I kept in the formula, I got this, because I have 3 slots left after that, and 8 numbers are there. Okay, no, sorry, 7 numbers are there because 2 have already been used. Okay, so if I have used 2, so I am left with how many numbers? 9 minus 7. So 7. So it's going to be 7 into 6 into 5. This is how it's going to be. Okay, if you multiply, you'll get your answer. Let's move on. Let's see question number 19. Question number 19 says find the number of different signals. You know signals, sometimes when you guys are racing और आपके पास different signals होते हैं. different signals के लिए आपके पास different झंडे होते हैं. Even if you have to show that India is coming, India has a different flag which is being used. There are 3 colors being used in that flag. Okay, no, 4. One is blue in the middle. So find the number of different signals can be given with 6 flags of different color hoisted
वन बिलो द अदर, सो डिफरेंट फ्लैग्स, कितने फ्लैग्स बन सकते हैं हमारे पास जब 3 फ्लैग्स बनाने हैं हमको, तो ऑल टुगेदर इफ आई सॉल्व दिस आई हैव ऑल टुगेदर ऑफ 6 फ्लैग्स, और मुझे ओके 6 फ्लैग्स से 3 फ्लैग्स बनाने हैं, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे करके कलर लगाने हैं, मुझे 3 कलर लगाने हैं, पर ऑल टुगेदर मेरे पास कितने कलर है 6, तो क्या अरेंजमेंट हो सकता है 6 इंटू 5 इंटू 4, okay, when you multiply 6 4s are 6 5s are 30, 30 into 4 120, that's going to be answer. Now at least 3 flags, कम से कम 3 फ्लैग्स तो होने चाहिए, 4 भी हो सकते हैं पर कम से कम 3 होने चाहिए, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं. So how I will be finding this, I'll be finding 6 permutation of 3, then 6 permutation of 4, 6 permutation of 5 and 6 permutation of 6. At least 3 flags, 3 flags to honi chahiye. So when I multiply this, I'll be getting 6 into 5 into 4. For this, I'll be getting 6 into 5 into 4 into 2, sorry 3. For this 6 into 5 into 4 into 3 into 2, and for this 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. How I am getting this? I am putting the formula n फैक्टोरियल n माइनस आर वाला, बट मैं सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं. जैसे 6 ये है 3 है, तो आप बैकवर्ड से 3 ही जाओगे, 3 ही नंबर लिखोगे. अगर 6 से 4 है तो आप 4 नंबर ही लिखोगे बैकवर्ड से, तो 1 2 3 4. अगर 5 है तो 5 नंबर, अगर 6 है तो 6 नंबर. So that's what how I am doing. So when I solve this, I'll be getting 120 out of this. When I solve this 120 into 3, that's going to be 360. This is going to be 720, and this is going to be 720, and I can add all of them. When I add all of them, I'll get the number of at least 3 flags. At least 3 है, मतलब मैं कितने भी फ्लैग्स, मैं कितने भी सिग्नल्स बना सकता हूँ. मैं ये वाला सिग्नल भी काउंट करूँगा जिसमें 6 फ्लैग होंगे, इस वाले में एटलीस्ट 3 फ्लैग्स, मतलब कम से कम 3 फ्लैग्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी फ्लैग्स हो सकते हैं. इज दैट ओके? Okay, let's have a look at the third part. Let's have a look at the third part. What does the third part say? Any number flag. कितने भी नंबर का फ्लैग हो सकता है, कितने भी नंबर का फ्लैग हो सकता है. तो वो फ्लैग अगर हम देखें वो एक कलर से भी बना हो सकता है, वो फ्लैग हम देखें वो 2 कलर से ही बना हो सकता है, वो फ्लैग हम देखें वो 3 कलर से ही बना हो सकता है, वो फ्लैग 4 कलर से भी, वो फ्लैग 5 कलर से भी, और वो फ्लैग 6 कलर से भी, है ना. एंड यू नो हाउ टू राइट दिस, राइट? यू हैव टू राइट दिस 6, इसका 6 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6 इंटू 5, इसका आ जाएगा सेम इसकी तरह 6 इंटू 5 इंटू 4, इसका आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड सो ऑन. एंड व्हेन यू गेट योर आंसर यू गाइस कैन ऐड देम. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज बेसिकली हमें 6 कलर के फ्लैग्स दे रखे हैं. उन्होंने बोला है डिफरेंट डिफरेंट झंडे बनाओ यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के झंडे में एक ब्लू होता है, सॉरी ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है और वाइट होता है. तो 3 कलर बना रहे हैं वो लोग. उन्होंने बोला था आप सेकंड वाले में, पहले वाले में बोला 3 कलर कैसे कैसे बन सकते हैं, अगर 6 कलर दे रखे हैं आपको, इसमें ऑरेंज वाइट और ब्लू, फिर ब्लू वाइट ऑरेंज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर कितने बन सकते हैं. तो मेरे पास कितने ऑर्डर बन सकते हैं 120. पर अगर 3 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 5 का भी और 6 का भी, तब कितने आपके पास आएंगे. ठीक है, तब इसके लिए है. ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट पार्ट. हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर वर्ड इक्वेशन. ना कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, जो वोवल्स नहीं होते. So how many spaces do I have? 1 2 3 4 5 6 7 8. I need to fill this 8 spaces. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 spaces I have to fill. But I know the consonants should come in the first and the last one. Now think about it, everyone. How many consonants are there, or find that out. So one is Q, T, N. So there are 3 consonants. Okay, so permutation
I have 3 consonant and I have how many slots to fill? The first one and the last one, 2 slots. इनटू ये खत्म हो गया, बाकी फर्स्ट और लास्ट स्लॉट तो खत्म हो गया. अब अगर मैंने 2 लेटर यहाँ यूज कर दी तो कितने लेटर्स बचे मेरे पास? कितने लेटर्स बचे? अगर मैंने यहाँ यूज कर दिया 6 लेटर बचे. ठीक है, और कितनी जगह बची मेरे पास? थिंक अबाउट इट. 1 2 3 4 5 6. आई एम लेफ्ट विथ 6. Okay, so what's your answer? Your answer is going to be 3 into 2 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and then you'll be getting your answer. So I'll just tell you again, the first and the last slots needs to be filled with the consonant. And how many consonants are there? I have 3 consonants. And how many spaces do I have left? 2 spaces I have left. Okay, then I'll be filling this up and finding but जो बाकी है, जो 6 जगह बाकी है उसमें 6 वर्ड्स बाकी है मेरे पास. 6 वर्ड्स कैसे हैं? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यूज हो गए. नाउ ओनली 6 वर्ड्स आर लेफ्ट विद मी. सो आई विल जस्ट मेक श्योर दैट आई fill the 6 spaces like this. Okay, let's have a look in question number 28, second part. How many odd numbers greater than 80,000? How many odd numbers? Keep that in mind. I have to make odd numbers. Okay, can be found using the digits 2 3 4 5 8 if each digit is used once in the number. अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसे 80,000 से ग्रेटर नंबर ही चाहिए तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है 8 के अलावा कि 9 हो सकता है, कुछ हो सकता है? नहीं है मेरे पास ऑप्शन, राइट. सो 80,000 से 5 है, 80,000 से मुझे बड़ा ही चाहिए. तो ये फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड है कि यहाँ तो 8 ही रहेगा, 8 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है यहाँ पे. बाकी आई कैन यूज दिस नंबर, बट ओवर हियर सी, ओवर हियर I only have to use odd numbers so that odd numbers can come. Odd numbers जब आखिरी में odd होगा तो odd ही आएगा. तो कितने odd numbers है मेरे पास? 1 2. So for this, if I have to find the permutation, I'll be taking 2 2. Okay, because sorry, 2 1. I have 1 slot and there are 2 objects I have, 3 and 5. So this is the permutation I'll be using. And then into 8 has already been used. इन दोनों में से एक यूज हो जाएगा. तो मेरे पास कितना बचा? 1 2 3. आई हैव 3 लेफ्ट फॉर दिस 3. सो P3 and I have 3 slots left. Okay, 8 is already being used over here. And now 3 और 5 में से let's say 5 यूज हो गया यहाँ पे. तो मेरे पास कितने बचे? 3 बचे. And I have 3 objects and 3 slots to fill. So I'm going to use this. So 2 into 3 into 2 into 1. Okay, and I'll get 12 as an answer. How many numbers can be there more than 80,000 using this numbers only? There can be many numbers more than 80,000, but only using this numbers there are only 12 numbers that will be greater than 80,000. Okay, I hope you guys got this, or how to do this questions. Okay, we'll be also solving some of the questions in the Zoom class as well. So be ready, but if you're not able to do, don't be stuck in one question. Keep doing it wrong. Also, if you are not able to do it wrong, it's okay, but do something. Okay, thank you so much for watching this video. Have a great day, everyone.